विश्व शांति की कामना के साथ डिब्रूगढ़ शहर के ग्राम बाजार अंचल में युवा सेवा समिति के तत्वाधान में आयोजित 3 दिवसीय अष्टयाम हरिकीर्तन के भव्य समापन के बाद विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। भीषण गर्मी के बाद भी इस शोभा यात्रा में महिला पुरुष बच्चों ने बड़े ही उत्साह के साथ भाग लिया। सभी भक्तिमय भजनों पर नाचते गाते हुए शहर के प्रधान मार्गों से गुजरे। इस दौरान धर्मपरायण लोगों ने शोभा यात्रा में भाग लेने वाले भक्तों को शीतल पेयजल पिलाया। शोभा यात्रा शहर के कचहरी घाट पहुंची, जहां अष्टयाम हरिकीर्तन में स्थापित भगवान की प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। इस कार्यक्रम में महिला पुरुष व बच्चों सभी ने बड़े उत्साह के साथ अपने कार्यों का निर्वहन किया। युवा सेवा समिति के पदाधिकारियों व सदस्यों ने इस कार्यक्रम में सहयोगिता प्रदान करने वाले सभी धर्मपरायण लोगों का धन्यवाद ज्ञापन किया है। डिब्रूगढ़ से कैमरा पर्सन मुन्ना घटवाल के साथ अरुण कुमार जैन की रिपोर्ट। 17 नंबर 18 नंबर 15 नंबर 16 नंबर এই গোটেইখিনিৰে মিলি আমি সুন্দৰভাৱে এই যাত্ৰাটোৰ আমি আয়োজন কৰিম আৰু আমি ভাবিছো যে নিশ্চয় আমাৰ এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ আমাৰ এই যজ্ঞৰ এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব। আপোনালোকৰ ইমান ভাতৃত্ববোধ বন আৰু 17 নম্বৰ ৱাৰ্ডত যিকোনো অনুষ্ঠানে আপোনালোকৰ অতি সুন্দৰ হয়, অতি মনোমোহা হয় আৰু আপোনালোকে সদায় এটা সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰে। মই আপোনালোকক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো। তাৰ লগতে আপোনালোকক মই এটা ভাল খবৰ দিবলৈ লৈছো। অহা 14 তাৰিখে ভালকে শুনক, অহা 14 তাৰিখে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে আপোনালোকৰ এই 17 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ আমাৰ জেল ৰোডৰ ওচৰত মই আপোনালোকৰ আগতে ঘোষণা কৰিছিলো যে 200 বেডৰ অসম মেডিকেল কলেজৰ এটা অংশৰ 200 কোটি টকা খৰচ এখন হস্পিটেল অহা 14 তাৰিখে গধূলি 5টা বজাত আমাৰ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে আধাৰশিলা ৰাখিব। এইটো এটা সঁচাকৈ আপোনালোকৰ 17-18 কাৰণে এটা ভাল খবৰ। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আহিব, এই সময় ইয়াতে ভূমি পূজন কৰিব, কৰি গভৰ্ণমেণ্ট ফিল্ডত তেখেতে এখন সভা পাতিব। মই আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছো যাতে আমাৰ 17 নম্বৰ 18 নম্বৰ 15 নম্বৰ 16 নম্বৰ সকলো ৰাইজসকল আপোনালোকে যাব। এইটো এটা ডিব্ৰুগড় সমষ্টিৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ এচিভমেণ্ট। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और पाए आपके क्षेत्र से जुड़ी हर एक खबर। अगर आप खबरें पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी लॉग इन करें www.सूचनाindia.co.in पर।